Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Now, right up front, let's be clear. What we're about to do is an assisted summary, drawing heavily from the book Interception, State Surveillance from Postal Systems to Global Networks by Bernard Keenan, published by the MIT Press. This is based on the excerpts and images you provided. Absolutely. And, as helpful as this kind of overview might be, a deep reading of the actual book is, well, it's really essential. It's a powerful reminder that wisdom, empathy, human understanding, these aren't things you just optimize, they're lived. That's so true. So seriously, whether or not you stick with this channel, we genuinely urge you, please make time to read Keenan's book. It's open access, really thoughtfully put together, and gives you a level of detail and nuance that honestly no summary can capture. Definitely. So our goal today, using these materials, is to trace the history of state interception powers, specifically in Britain. We're starting way back 17th century and following that thread right up to the complex digital networks we're all using now. Yeah, we'll be diving into the introduction, the contents, bits from different chapters, and even looking at some fascinating images of old warrants from the book. The mission, really, is to see how state power wasn't static. It was actively, made and remade through history. Right, constantly interacting with new technology, new kinds of media, legal ideas, how things were administered, and even, public opinion and pushback. Okay, so let's really get into this. The book makes a core point right away. Interception, as a modern thing, wasn't some grand plan from the start. No, it was more born from contingency, specific circumstances, almost by chance, you could say. But it's been there, shadowing communication pretty much from the beginning. That's a really interesting way to frame it. So think about the Postal Service. Back in the 17th century, the state sets it up mainly for order, control, maybe generate some cash. Right. But just by having that control over all those letters flowing through the system, well, suddenly the state gets this built-in opportunity. The Postal Service itself becomes a surveillance tool, almost inherently. Exactly. And the early justification for using that power was pretty stark. Ideas like raison d'etat, the reason of the state, and absolute sovereignty. So basically placing these powers above the normal law. Pretty much. Yeah. There's that great quote from Samuel Morland, quite a character back then. He explicitly told princes to make the General Post Office a watchtower. A watchtower! Wow. His words were something like, a skillful prince ought to make watchtowers of his General Post Office. A physical metaphor for surveillance built into the communication system itself. It really paints a picture, doesn't it? But people writing letters weren't just, passively accepting this. The sources show resistance was happening even then. Oh yeah. People used ciphers, secret codes. They even set up illegal, unofficial postal networks to try and get around the state system. And the book mentions steganography, hiding messages. Both technical, like invisible ink, the old milk or onion juice recipes. Huh. How? And linguistic steganography, where you hide a message in plain sight within a totally normal-looking text. Clever stuff. So how did the state manage this power, this potential to intercept? Well, they developed an administrative tool, the Interception warrant. Even way back then, this warrant, issued by a Secretary of State, was the way to bring some order to it, to control who was doing the intercepting and target specific people or groups. So it wasn't just random snooping. There was an official secret process. Okay. Now, moving into the 18th, 19th centuries, the sources say the focus shifts a bit. Yeah, the state becomes less purely about, policing and more interested in commerce, communication, facilitating things. And what's interesting is the state itself becomes more sensitive to its own reputation, its publicity. How it looks matters more. Exactly. And this is when you get the secret office, sometimes called the Black Chambers in Britain. This is the actual, workshop for interception. Right. These incredibly skilled people inside. Highly skilled. Their job was super delicate. Select the target letters, open them without leaving any sign, copy the insides, and then reseal them perfectly. So the person receiving it would never know. The skill involved there. Opening and resealing wax seals. The book mentions they'd study handwriting and how someone applied their seal. That's amazing. These were serious craftspeople, highly trained. And this secret practice, it gradually got this thin layer of legal cover. The 1710 legislation was important. That's the one requiring a Secretary of State warrant specifically for opening mail. Yes. And postal workers even had to swear a special oath, the Section 41 oath, which mentioned warrants. And we have actual examples, right? The Dr. Hensey case in 1758, his intercepted letters were used against him. Shows the system was working.
from the state's perspective. And the images of the warrants themselves, there's one from August 1726. It targets like 90 people. And the first name is the Emperor. Yeah, that one really shows the scale, the wide net they could cast. And then there's another from 1792 targeting political figures, including Thomas Paine. But these secret things didn't always stay secret, did they? There was pushback. The source mentions a big scandal in 1844. Oh yeah, a major one. Over letter opening at the post office. It blew up when a Chartist MP, Thomas Duncombe, stood up in Parliament and directly asked the Home Secretary, Sir James Graham. Asked him if his letters were being opened? Exactly. Bold move. And Graham's response is really significant historically. What did he say? He refused to answer. Said it wasn't consistent with his duty. And that exchange, the Graham-Duncombe back and forth, is often seen as the possible origin of neither confirm nor deny, NCND. Wow. So NCND goes back to a 19th century fight about opening mail. That's quite something. It seems so. After that, warrants became more routine, administrative, handled by undersecretaries. They started making distinctions, on paper anyway, between crime and political surveillance. But the committees looking into it in 1844, they weren't exactly impartial. No, the secret committee reports were seen as pretty political, quite partial. Their main recommendation was basically keep the power but keep it quiet. Leave it a mystery was the vibe. Tells you a lot about the preference for secrecy over openness, even then. Definitely. And around the same time, you get the penny post in 1840. Revolutionized the mail system, universal addresses. Which, while making things efficient, also subtly changed how the state could potentially track things, right? Less reliant on local knowledge. Exactly. Okay, so that's the postal epoch. Now let's shift into the electrical epoch. Telegraph, early telephone. Right. These technologies felt like they were shrinking the world, annihilating distance. But the book argues they actually intensified time, standardized it, created time advantages, especially for whoever controlled the information flow, like the state. And surveillance adapted again. Telegraph warrants let authorities intercept messages, get that time edge. Yeah, the mechanism changed. It was about relaying targeted messages from local offices up to HQ. And there was a legal opinion in 1886 saying this was okay with a warrant. And storage became a new challenge, right? Telegrams kept for months. Created this huge archive. You could potentially reconstruct communications long after they happened. Filing systems got way more complex. Alphanumeric codes, all that. The sources mention a telegraph strike in 1871. Army clerks brought in. Yeah, and what's interesting there is they deliberately delayed press telegrams about the strike. So not just reading messages, but controlling the flow of news. Exactly. Information control for strategic reasons. Right. Then the telephone comes along. Yeah. Tapping phones was initially very physical, mechanical. Tied to the wires, the network setup, microphones, batteries. Right. And the operators themselves, they were potential interceptors. Operator, number please. Yeah, I remember hearing about that. And undersea cables, hugely important. Oh, massively. The cerebrospinal axis of the empire, they called it. Strategic assets. Faced physical threats, cutting the cables, but also financial ones. Foreign companies buying shares. Which led to the push for the all-red line, cables only on British territory. Exactly. Reduced vulnerability physically and for intelligence. And in wartime, like the Boer War, you get cable censorship. But focused on coded messages, not just reading plain text. Yeah, trying to stop or suppress transmissions they couldn't easily read. Yeah. And wireless radio. That must have seemed impossible to intercept at first, over the air. Initially, yeah. People like Maskelyne demonstrated that openness. Yeah. But the state figured it out. Listening watches, turning ships into mobile surveillance points. And World War I really kicked off signals intelligence. SIGINT. Absolutely. Base stations listening in. SIGINT was born. The focus shifts from just the message content to the transmission itself. Radio waves, equipment, location, materiality. So the tech constantly changes how they do it. Letters, wires, airwaves. Okay, 20th century, security services, secrecy, and eventually legislation. World War I saw a huge expansion of censorship. Defense of the Realm Act, 1914. The Secret Service Bureau, later MI5, starts systematically intercepting mail, building these massive index. And then the process was incredibly detailed, wasn't it? Examining paper, ink, stamps, seals. Meticulous, looking for physical tampering. An invisible ink milk. Onion juice, again, it wasn't just bulk scanning, it was real craft. And effective, apparently. Against German spies. The book says so, yeah. This period really cemented MI5's role as the hub for precautionary information, gathering intelligence, often outside direct government control.
A big accumulation of power. Which didn't go unnoticed. Critics like Harold Lasky pointed out these powers operating in a legal gray area, like state mysteries. Exactly. That tension between secrecy and publicity just keeps going. MI5 monitored the press for reports about things like the black cabinet in the post office. There were even accidental leaks, misplaced slips revealing things. Yeah. And it's telling that even MPs were sometimes seen as potential targets for surveillance. Meanwhile, phone tapping evolves, from mechanical connections to more automated systems. Right. Tape recorders make transcription easier, though you still needed linguists, especially for encrypted Cold War stuff. And eventually the network itself gets built with interception in mind. Yeah, by the 70s, with automated exchanges replacing operators, physical taps changed. Specialized teams connecting red jumper cables at the exchange, or using computer control. Programming systems to record calls based on target numbers, selector numbers. The Cold War definitely prioritized phone tapping, didn't it? Yeah. Especially with encryption involved. Hugely. Transcription rooms needed Russian speakers, for example, to handle the volume. But oversight was still lagging behind all this tech. For a long time, yeah. The Burkett Report in 1957 looked into phone tapping, but only domestically. Totally excluded GCHQ, SIGINT. And it found tapping was okay, legally, based on history. Yes, but it also slammed the security service for terrible record keeping. They'd destroyed most records from before 1952. We even have an image of a 1957 warrant for tapping someone named Neil Lawson. Shows the form they used right before Burkett. Right. So during this time, there's growing public awareness, some concern, but politically, the lack of clear rules was often defended, for operational reasons, secrecy, efficacy, until the Malone case. Late 70s, early 80s, that seems like a turning point. A major one. Mr. Malone challenged police phone tapping. The UK court said, yeah, it's lawful, but admitted it was legally murky. So he went to Europe, the ECHR. He did. And in 1984, the European Court of Human Rights ruled decisively. UK interception violated human rights, Article 8, because the law wasn't clear, accessible, or predictable enough. That's huge. It basically forced the UK government to legislate, didn't it? Made it inevitable, which led to the Interception of Communications Act 1985 IOCA. IOCA, that required warrants from the Secretary of State and specified grounds. Yep. National security, serious crime, economic well-being. It was a big step towards trying to bring these secret practices into line with public law, human rights, an attempt to normalize the power under statute. Even if a lot still stayed secret. Oh, absolutely. Which brings us towards the digital age, defined by computing power, bulk data, and integration. The radio SIGINT stuff continued post-WWII, right? UKUSA alliance. Definitely. But the big shift was towards bulk interception. Tapping microwave links, satellites, automation became key. Computers, automated selectors. Building on those early code-breaking computers like bombs and Colossus. Exactly. GCHQ's role just kept expanding, especially during the Cold War. Yeah. And then, boom, Snowden, 2013. Changed everything for public awareness. Exposed the sheer scale of GCHQ and SA mass surveillance. The scale is just mind-boggling. Bulk interception now means tapping data flowing across fiber-optic cables, the bearers, collecting vast amounts of metadata. Billions of events a day, stored for weeks. Yeah, systems called black hole, things like that. And the targeting changes too. It's less about one person's phone line, more about using automated selectors. Stored in big databases, like Broad Oak mentioned in the source material, filtering the bulk data. Right. Using machine learning, mapping connections, looking for anomalies. They're even identifying non-human targets now, like malware spreading. Which creates new problems, like how do you know the algorithm got it right? Truthing the data. Exactly. And weak labeling if the data you train the AI on isn't perfect. Big technical challenges. And the state's reach isn't just intercepting data moving around, it's integrating with private platforms too. Yes. Accessing data held by companies, think PRISM, using NSA's FISA Section 702 power, and computer network exploitation. Hacking. Stealing data. The sources mentioned GCHQ hacking Belgacom with region malware. And even trying to weaken encryption standards themselves. Yeah. Like that dual ECD-RBG thing. There's that image, treasure map. Looks like a map of the internet stack. Yeah, shows how the NSA view the internet's layers. Surveillance operates across all those layers. Earth, address, city, cloud, interface, user. And the law tries to engage at the interface level. Often, yeah. Those GCHQ operational legality slides showed that. Applying the law at technical points, like needing a justification code to put a selector into the Broad Oak filter. We see an image of that input screen. Post-Snowden, loads of legal challenges, right? Yeah. Big Brother Watch challenging bulk interception under the old law, RIPA. Yes.
The UK's Investigatory Powers Tribunal, the IPT, initially said it was okay, but the ECHR later disagreed in 2021. Said there wasn't enough control over selectors' metadata. And the IPT also ruled on intelligence sharing. Data from foreign allies needed a clear UK legal basis. Right, which led to disclosing those international arrangements and that unlawful past to lawful future ruling, trying to clean things up legally. Plus cases about getting bulk personal data sets, BPDs, from phone companies. All these challenges, plus reviews like David Anderson's, they all push towards the Investigatory Powers Act 2016, the IPA. The big one, trying to codify everything. Targeted interception, bulk data, hacking, BPDs. Pretty much. Put it all into statute. And introduce new oversight things, like the double lock warrants needing a judge and a minister, unified oversight with IPCO, annual reports. Trying to normalize the power, perform accountability. That was the aim. Bring transparency, legalize the powers, but the legal stuff keeps evolving. ECHR rulings still challenging bits of the IPA, like selector controls. Yeah. And that line between interception and hacking equipment interference, it's getting really blurry. Accessing data in transit versus data on a device. Technically different, legally converging. The book calls this the epoch of the stack, using Benjamin Bratton's model, because surveillance is integrated across all those digital layers. Exactly. Physical cables, networks, data centers, software interfaces, users. It's all connected. And we're seeing intelligence itself become more privatized. Definitely. UK agencies contracting with Amazon AWS for cloud services. Interest in private data analytics firms like Palantir. And the big challenge, Yeah. end-to-end encryption. What's the response? Seeking exceptional access. Ways around it. Sometimes by altering software without you knowing. Changing the interface, like that Anom phone sting. Where the secure phone was actually run by law enforcement. Precisely. And even the regular cybersecurity industry becomes an intel source. They collect tons of internet traffic data, DNS logs. Records of website lookups. Yeah, analyzing that for threats gives them, and potentially the state, huge insights. So the new model really is integration. State surveillance integrating with private platforms, private data, private infrastructure. That's the key takeaway. Interception and access happen through integration. And the law tries to operate at that interface, authorizing access, demanding checks, requiring records. But it's always chasing the technology, the scale. It's a complex picture. The law trying to keep up in a world of massive data flows, dual-use tech, private infrastructure. It really is. It has been quite a journey, though, hasn't it? From someone carefully steaming open a letter in a secret room to managing these immense global streams of digital data analyzed by algorithms, integrated across the networks we use every day. And that core tension is always there, isn't it? Through Okay. every era. State power versus technology. Secrecy versus publicity and accountability. The law struggling to frame practices happening in the shadows. And the nature of watching has fundamentally changed, from targeted listening or reading Yeah. to bulk collection, automated analysis, and this deep reliance on integrating with the private digital world. So, thinking about all of this, the bulk data, the algorithms, the integration with private companies, it really leaves you with a big question, doesn't it? How effectively can the law actually define and protect privacy in this environment? Yeah. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। আজ আমরা বার্নার্ড কিনানের লেখা একটা বই, ইন্টারসেপশন, স্টেট সার্ভেলেন্স ফ্রম পোস্টাল সিস্টেমস টু গ্লোবাল নেটওয়ার্কস, সেটার একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএম দিয়ে তৈরি করা সারসংক্ষেপ নিয়ে কথা বলছি। হ্যাঁ। বইটা দেখিয়েছে ব্রিটেনে কিভাবে রাষ্ট্রীয় নজরদারি সেই সপ্তদশ শতাব্দীর পোস্টাল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজকের গ্লোবাল নেটওয়ার্কে এসে দাঁড়িয়েছে। লেখক বার্নার্ড কিনান আর প্রকাশ করেছে MIT প্রেস। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমাদের আজকের এই আলোচনা কিন্তু ওই এলএলএম সারসংক্ষেপটার ওপরেই ভিত্তি করে। হ্যাঁ, আর দেখুন, এটা মনে রাখা দরকার যে এই সারসংক্ষেপগুলো হয়তো তথ্যের একটা ঝটজলদি ছবি দেয়, কিন্তু একটা বই যখন আমরা গভীরভাবে পড়ি তখন আমাদের যে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি বা মানবিক বোঝাপড়াটা তৈরি হয় সেটা অন্যরকম। একদম ঠিক। এগুলো তো আসলে যাপন করার বিষয়, অপটিমাইজ করার নয়। তবে হ্যাঁ, এই সারসংক্ষেপ কিনানের বিশাল কাজের মূল কিছু ধারণা পেতে তো সাহায্য করবেই।
ঠিক। আর যারা আরও গভীরে যেতে চান তাদের জন্য তো এমআইটি প্রেসের কেনানের মূল বইটা আছেই, ওপেন অ্যাক্সেস। হ্যাঁ, অবশ্যই। পড়ার জন্য সময় বের করার অনুরোধ থাকলো, চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হন বা না হন। কিন্তু এখন আসু খুলে দেখি এই সারসংক্ষেপ আমাদের কি বলছে, বইটার মূল যুক্তিটা কি, মানে মূল ব্যাপারটা কি। দেখুন, সারসংক্ষেপ অনুযায়ী কেনানের মূল কথাটা হলো যে রাষ্ট্রীয় নজরদারির যে ইতিহাস, সেটা আসলে যোগাযোগের প্রযুক্তির যে বিবর্তন তার ইতিহাসের সাথেই একদম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ও আচ্ছা। যখনই কোনো নতুন যোগাযোগের মাধ্যম এসেছে, রাষ্ট্র প্রায় সাথে সাথেই সেটাকে নজরদারির আওতায় আনার জন্য নতুন কৌশল তৈরি করেছে বা করার চেষ্টা করেছে আর কি। তার মানে ব্যাপারটা শুধু চিঠি থেকে ইন্টারনেটে প্রযুক্তির বদল নয়, নজরদারির পদ্ধতিরও একটা ধারাবাহিক বিবর্তন। হ্যাঁ, একদম। আর সারসংক্ষেপ বলছে কিনান শুধু টেকনোলজির কথা বলেননি, উনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রতিটি নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নজরদারির জন্য দরকারি আইন তৈরি হয়েছে। আইনও? হ্যাঁ, আইন, প্রশাসনিক কাঠামো বদলেছে, এমনকি রাষ্ট্রের ক্ষমতাও নতুন করে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ভাবুন একবার, শুরুতে হয়তো পোস্টাল সিস্টেমে চিঠি খুলে পড়ার জন্য কিছু লোক লাগত, গোপন ঘর লাগত। পরে যখন টেলিগ্রাফ এলো, তখন দরকার হলো তারে আড়ি পাতার কারিগরি জ্ঞান, যন্ত্রপাতি। টেলিফোন বা ইন্টারনেট, সেটা তো প্রক্রিয়াটাকে আরও অনেক বেশি জটিল আর বিস্তৃত করে তুলেছে। এখানে মজার বিষয় হলো, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে শুধু তথ্যের আদান প্রদান নয়, এটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিস্তৃতি আর প্রয়োগের একটা ক্ষেত্র। কিনানের যুক্তিটা সারসংক্ষেপ অনুযায়ী অনেকটা সেরকমই দাঁড়াচ্ছে। প্রতিটি প্রযুক্তি একদিকে যেমন যোগাযোগের সুযোগ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের আরও গভীরে নজর রাখার সুযোগও করে দিয়েছে। আবার সারসংক্ষেপ এটাও বলছে যে বইটাতে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথাও আছে, নজরদারি এড়ানোর চেষ্টার কথাও। ও, সেটাও আছে। হ্যাঁ, মানুষ তো সবসময়ই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নতুন পথ খুঁজেছে। সেটা হয়তো আগেরকার দিনে সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার ছিল, আর আজকের দিনে ধরুন এনক্রিপশন। তার মানে ক্ষমতার এই খেলাটা, এটা একমুখী নয়। একদিকে নজরদারির প্রযুক্তি, ঠিক, আর অন্যদিকে তাকে এড়ানোর কৌশল, দুটোই চলছে। ঠিক তাই। আর সারসংক্ষেপ অনুযায়ী কিনান দেখিয়েছেন কিভাবে এই টানাপোড়েনটা সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চলে আসছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে? হ্যাঁ। আর আজকের ডিজিটাল যুগে এসে তো ব্যাপারটা একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে। এখন তো আর নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির চিঠি বা ফোন কল নয়, এখন বিশাল পরিমাণ ডেটা, মেটাডেটা বিশ্লেষণ করে নজরদারি বা মাস সার্ভেলিয়েন্সের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রের। তাহলে এই প্রেক্ষাপটেই কি এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা তথ্য, বা ধরুন যুক্তরাজ্যের ইনভেস্টিগেটরি পাওয়ার্স অ্যাক্ট 2016, এই সাম্প্রতিক বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে? সারসংক্ষেপে কি এগুলোর কোনো উল্লেখ আছে? হ্যাঁ, সারসংক্ষেপ অনুযায়ী কিনান এই সাম্প্রতিক ঘটনা বা আইনগুলোকে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি। আচ্ছা, ব্যক্তিগত পরিসরের সংজ্ঞা, এই মৌলিক প্রশ্নগুলো কিন্তু রয়েই গেছে। তাহলে এই যে আলোচনাটা হলো, এই সারসংক্ষেপ থেকে মূল টেক আওয়ে কি দাঁড়ালো? আমরা দেখলাম নজরদারির একটা লম্বা ঐতিহাসিক যাত্রা, পোস্ট অফিসের সেই গোপন চেম্বার থেকে শুরু করে আজকের দিনের অত্যাধুনিক ডেটা অ্যানালিটিক্স পর্যন্ত। ঠিক, আর এই ঐতিহাসিক জ্ঞানটা আজকের ডিজিটাল পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, ততই কিন্তু রাষ্ট্রীয় নজরদারির ক্ষমতা আর নাগরিক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চ্যালেঞ্জটা বাড়ছে। তা তো বটেই। কেনানের বইটি যেটা বলছিলেন যে এমআইটি প্রেসের ওয়েবসাইটে ওপেন অ্যাক্সেস পাওয়া যায়, সেটা এই জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত আর গভীর আলোচনা করেছে, যা এই সংক্ষিপ্ত আলাপে তো ধরা সম্ভব না। অবশ্যই, যারা এই বিষয়ে আরও জানতে চান তাদের জন্য বার্নার্ড কিনানের মূল বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অন্যরকম হবে, এটা আমরা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। আর আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন হয়তো সবার ভাবনার জন্য রেখে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, বলুন। এই যে যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে, এটা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় নজরদারির ক্ষমতা আর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার যে সম্পর্ক, সেটাকে ঠিক কোন দিকে নিয়ে যাবে? এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কি স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতার কোনো নতুন পথ খুলবে, নাকি নজরদারির জালটাকে আরও বেশি বিস্তৃত, আরও দুর্ভেদ্য করে তুলবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव
और मैं हूं निकिता। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, ये देखने कि कैसे सरकारों ने हमेशा से हमारी बातों पर कान लगाए रखे हैं, चिट्ठियों से लेकर आज के इंटरनेट तक। और ये सारी बातचीत बर्नार्ड कीनन के एक बहुत ही बढ़िया किताब पर आधारित है, इंटरसेप्शन, स्टेट सर्वेलेंस फ्रॉम पोस्टल सिस्टम्स टू ग्लोबल नेटवर्क्स। लेकिन हाँ, एक चीज़ शुरू में ही साफ कर दें, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस किताब का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM से बनवाया गया सारांश है। असल समझ, गहरी बातें वो तो खुद किताब पढ़ने से ही आती हैं। ज्ञान और सहानुभूति जीने से मिलते हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज़ MIT प्रेस की ये बेहतरीन ओपन एक्सेस किताब ज़रूर पढ़ें। टाइम निकालिए इसके लिए। तो चलिए, कीरन की किताब ब्रिटेन की कहानी बताती है 17वीं सदी से लेकर आज तक कैसे हर नई टेक्नोलॉजी के साथ जासूसी के नए तरीके आए और कानून कैसे बस पीछे पीछे चलता रहा। खोलते हैं इस कहानी को। किताब कहती है कि हर दौर का अपना एक अलग इंटरसेप्शन शासन था, मतलब कानून, तकनीक, सोच, सबका एक मिक्स। शुरुआत डाक युग से हुई। 17वीं सदी में चिट्ठियां रोकना क्या बहुत आम था? ओ बिल्कुल। उस टाइम पोस्टल सर्विस सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं करती थी, वो एक निगरानी का टूल भी थी। रेज़ोन देता का बहाना देकर, मतलब राज्य के हित में, लेटर्स को इंटरसेप्ट करना, पढ़ना, ये सब जायज था। और कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकते थे लोग। मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इसीलिए तो लोग सिफर मतलब कोड भाषा इस्तेमाल करते थे बचने के लिए। और हाँ, ये जो वारंट्स होते हैं वो शुरू से ही इस पावर को थोड़ा सिस्टमैटिक करने का तरीका थे। लेकिन फिर 19वीं सदी आई और चीजें थोड़ी बदली है ना। वो मेजनी वाला मामला 1844 का। हाँ, वो काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेजनी, वो इटालियन क्रांतिकारी, उसके पत्र रोके गए पोस्ट ऑफिस से, तो उस पे पॉलिटिकल हंगामा हो गया और पहली बार प्राइवेसी और कॉमर्स को, मतलब निजता और व्यापार को, ज्यादा अहम माना गया। अच्छा। और यहीं से वो ऑफिशियल सीक्रेसी वाली बात शुरू हुई। और वो जो सरकारें आज भी करती हैं, न कंफर्म करेंगे न डिनाई करेंगे, वो पहली बार संसद में यहीं सुनने को मिला। कमाल है। और इसी सब के बीच बिजली आ गई, टेलीग्राफ, फिर टेलीफोन। इसने तो निगरानी के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए होंगे। यकीनन टेलीग्राफ ने तो टाइम और स्पेस को जैसे सिकोड़ दिया और सरकारों ने इसका खूब फायदा उठाया, खासकर जंग वगैरह में। टेलीफोन टैपिंग भी शुरू हो गई, हालांकि शुरू में ज्यादातर बिना किसी नियम कानून के ही, मतलब बस टैप कर लेते थे। हाँ बिल्कुल। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, तब तो सेंसरशिप बहुत बढ़ गई। कोड तोड़ने के नए नए तरीके निकले, जैसे वो जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने की कोशिशें। और इसी टाइम पर GC&CS जैसी एजेंसियां बनी, जो बाद में GCHQ बनी। तो टेक्नोलॉजी तो भाग रही थी, पर कानून वो शायद पीछे रह गया। 20वीं सदी में, खासकर कोल्ड वॉर के टाइम, फोन टैपिंग और ये सिग्नल इंटेलिजेंस यानी सिगिंट। हाँ, सिगिंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जहां सिर्फ बात क्या हो रही है ये नहीं, बल्कि कौन कब कहां बात कर रहा है, मतलब जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं, वो जानकारी भी जमा की जाने लगी। लेकिन कानूनी तौर पर स्थिति साफ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी धुंधलापन था। जैसे वो बिरकेट रिपोर्ट 1957 आई, फिर मिलोन केस 1979 हुआ। मिलोन केस में जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बोला, तब जाके ब्रिटेन में इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशंस एक्ट 1985 मतलब IOCA आया। ये पहली बार था जब इंटरसेप्शन के लिए एक साफ कानूनी बेस और वारंट की जरूरत तय हुई। और फिर आया कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर। एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे 2013 वाले, वो तो मतलब हिला देने वाले थे। बिल्कुल। स्नोडन ने तो बताया कि कैसे NSA और GCHQ जैसी एजेंसियां बड़े पैमाने पर डेटा जमा कर रही थी, सीधे फाइबर ऑप्टिक केबल से टैप करके। वो टेम्पोरा प्रोग्राम और गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों के जरिए प्रिज्म प्रोग्राम। यहाँ वो मेटा डेटा और कंटेंट का फर्क बहुत अहम हो गया है ना। हाँ, मेटा डेटा कौन, कब, कहाँ, और कंटेंट असल बातचीत, दोनों जमा हो रहे थे। और सरकारें कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन CNE का भी इस्तेमाल कर रही थी। CME मतलब सरकारी हैकिंग। हाँ, आसान भाषा में कहें तो वही। तो इस सब के बाद कानूनों में भी बड़े बदलाव हुए होंगे, जाहिर है। बिल्कुल। ब्रिटेन में इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2016 यानी IPA आया। ये कानून बल्क इंटरसेप्शन, इक्विपमेंट इंटरफेरेंस यानी हैकिंग और बल्क पर्सनल डेटा सेट के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। थोड़ी जुडिशियल ओवरसाइट मतलब न्यायिक निगरानी भी इसमें डाली गई। किताब एक एकीकरण की योग्य एज ऑफ इंटीग्रेशन की बात करती है। इसका क्या मतलब है? किनन का तर्क है
कि अब हम एक ऐसे फेज में हैं जहां सरकारी निगरानी और प्राइवेट कंपनियां ये दोनों जैसे घुल मिल गई हैं। सरकारें अब Amazon, AWS, Palantir जैसी कंपनियों के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई हैं। अच्छा। इसे समझने के लिए बेंजामिन ब्रैटन का स्टैक मॉडल हेल्प करता है। वो डिजिटल दुनिया को कई लेयर्स में देखता है, अर्थ, क्लाउड, सिटी, एड्रेस, इंटरफेस, यूजर, और निगरानी अब इन सारी लेयर्स में मतलब हर स्तर पर घुस चुकी है। तो निचोड़ क्या है? ये किताब हमें क्या दिखाती है? ये कि इंटरसेप्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी या कानून का मसला नहीं है। ये पावर, सॉवरेनिटी मतलब सत्ता और संप्रभुता और समाज कैसे बदल रहा है उससे गहराई से जुड़ा है। सही कहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, निगरानी के तरीके और उसे सही ठहराने के तर्क भी बदल जाते हैं। और ये जो एकीकरण का युग है, ये सरकार, प्राइवेट सेक्टर और हम लोगों के बीच की लाइनों को और भी धुंधला कर रहा है। हमारा डेटा अब हर जगह है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी इस डिजिटल स्टैक में और ज्यादा इंटीग्रेट होती जा रही है, तो निगरानी के ये जो अदृश्य परतें हैं, जो सरकारी और निजी दोनों हाथों में है, ये हमारे अनुभव को, हमारी आज़ादी को कैसे बदल रही हैं? क्या लगता है? इस पर और गहराई से सोचने के लिए और समझने के लिए एक बार फिर कहूँगी, बर्नार्ड कीनन की किताब इंटरसेप्शन ज़रूर पढ़ें।